everyone, welcome back to the channel. So in this video, I am doing a podcast with Sinchana. She is a college student. She is a second year college student, and she's done freelancing in her college. So I would like to help you that if you want to start your freelancing journey and want to earn some money side by side, so how can you do that? So she'll be able to get you explain more better what is freelancing, how you can start, and what is your income should be like in the freelancing, how you manage your time in your college, all these things. So not waste much of your time, and I would like to introduce Sinchana, and she will explain more of this freelancing journey because she is doing it for 2 years now. So I hope you will enjoy the video till the end. So let's get started. And so hi Sinchana, so how are you? Hi everyone. Hi Lupta. I am so good. I'm very happy. Okay. And yeah, what about you? How are you? Yeah, I'm also good. So you are a second year college student, right? Yes, I am a second year college student. Yeah. Okay. So how you get into freelancing? So it's been like 1.5 years now. I started freelancing. जब मैं just pass हो गई थी, I mean 12th standard के, I gave all my competitive exams जो भी था, and then I got into freelancing. तो अभी तक I am doing this freelancing only. Okay. So this and to answer why did I get started? The thing is when I was in 12th standard, I used to watch some YouTube videos. So they were talking about this freelancing, graphic designing, and all of that stuff. So I was like, क्या है, let me try, and I'm that first type of person जो भी कुछ देखता है तो next time I just go and implement it. So that's how I started, Okay. and yeah, तो start किया, अभी जाने का मन नहीं कर रहा back. Like freelancing interests you so much, like you like doing this stuff. Okay, so my second question is like how you get your clients. Like in the freelancing, you are your own boss, so you have to find some clients to do some work, getting some testimonials, all kind of stuff. So how you get your first client, and what are the skills that you used to get the client initially? Um, yeah, so as I said, I was watching all these YouTube videos. So वहाँ पे they used to mention these websites, Fiverr.com, Freelancer.com, and all of that stuff. And जब मैं वहाँ पे गई, when I went there, I got to know कि some websites were asking money, and some websites already had many freelancers there. और मैं तो न्यूबी थी, मुझे समझ नहीं आया, मैं पागल हो गई तब कि क्या है एंड ऑल. तो मैंने थोड़े दिन छोड़ भी दिया था. उसके बाद then I saw this Saheli Chatterjee का videos, and she was the one who always tell कि Facebook में ढूंढो the clients and all. तो वहां से start हुआ था. Even though I discovered सलोनी, उसके बाद पता चला कि जो सहेली है वो सलोनी की स्टूडेंट है. तो या सो वहां से मुझे पता चला. तो देन आई जैसे उन्होंने बोला, मैंने आई जस्ट वेंट टू फेसबुक, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई स्किल नहीं था. आई वाज लाइक मुझे एक्सपेरिमेंट करना है. तो जब मैं गई तो मेरे को एक क्लाइंट मिली जिसको जो है ना टैग, उसको बोलते हैं कंटेंट वीडियो डेवलपमेंट. ओके, तो वो शी वांटेड मी टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ मी टीचिंग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. एंड मैं तो पीसीएमबी स्टूडेंट थी 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाना इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी. तो आई जस्ट एक्सेप्टेड. और उसके बाद एंड शी टोल्ड मी कि कौन सा सॉफ्टवेयर शी वांट्स मी टू रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, एंड आई डिड इट एंड आई सेंट टू हर. आई मेड समथिंग अराउंड like 8 videos to her, and I Okay, so that was your first client experience, like in the teaching. yes, the teaching client. Teaching. Okay. So how much did you get, the amount of money you get from the first? I got 3,000. 3,000. My first client paid me 3,000. Yeah, so initially, okay, that's not bad actually. And she also told me if I make mistakes in teaching, she will I mean, reduce the amount because I did everything fine. So 3,000 she paid me. So can we, like in the freelancing game, like first amount is good, like you tried out and you got 3,000 by your teaching skills. Then what
we have to do to upskill, like to raise our income, like to if you want to earn 50K, 1 lakh, what should we have to do and how we get started? If you know any roadmap to do that, you will also discuss that. So what's your point? So first of all, to earn 1 lakh, एक लाइन से तो तुम सडनली आप आओगे तो आपको तो मिलेगा नहीं. आपको ब्रेक डाउन करना होता है कि यू हैव टू टारगेट, लाइक इवन if you onboard a client for 5,000, तो 5,000 एक क्लाइंट आपको दे रहा है तो इंटू करो आप, मतलब आपको चाहिए 20 क्लाइंट्स. 5,000 जो पे करेंगे, 20 क्लाइंट्स एक मंथ में आपको चाहिए, तब वो होते हैं 1 लाख रुपीज. सो लाइक दैट. तो अगर इट्स ऑल अबाउट अब अपस्किलिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो कुछ स्किल हम लोग लर्न करते हैं, एंड द मेन पार्ट इज वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो नेक्स्ट एडवांस्ड स्किल है, तब हमको वो पता चलेगा. द बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए. तो आई हैव सीन मेनी पीपल हु डायरेक्टली जंप टू एडवांस स्किल, तो उनको ना कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है. तो वो लोग क्या करते हैं, इवन आफ्टर टेकिंग कोर्स दे विल बी लाइक we want this person to handle our business, we want that person to handle our business. So first of all, don't go behind money. Okay, money will come to you. Like as I said कि आप 5,000 में या 3,000 में भी आप बहुत सारे क्लाइंट्स कर सकते हो. पहले ग्रोथ पे ध्यान देंगे और जो ऑलरेडी हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप. मेरा भी समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसी हुआ था. जैसे मैंने आपको बोला 3,000 मेरे को एक क्लाइंट ने पे किया, तो एक क्लाइंट ने पे किया था. उसके बाद जो क्लाइंट्स मिले थे मुझे, मैंने 2,000 पे भी वर्क किया है एज अ बिगनर आफ्टर दैट. सो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू शुड बी हंग्री ऑफ ग्रोथ. उसके बाद क्या होता है, वो खुद आते रहेंगे. अभी नाउ आई एम ऑन बोर्डिंग पर क्लाइंट ही मेरे को ज्यादा रुपीज देते हैं, 10,000 to 20,000 एक क्लाइंट. ऑल्सो इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आप हम लोग को इंडियन क्लाइंट्स जो है उनको 10,000 ज्यादा होगा, बट इंटरनेशनल लोगों को जब आप कन्वर्ट में होता है वो बहुत कम रुपीस में उनको मिलता है. तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क करना स्टार्ट करोगे तो यू कैन अर्न मनी इन अ बेटर वे. आई मीन जल्दी से तो, अगर आपको मनी जल्दी चाहिए तो हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक एज अ कॉलेज स्टूडेंट वैसे भी मैं लाख में भी अर्न करूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज. सो आई थिंक पेशेंस से धीरे धीरे स्टार्ट करने से वो वो होगा. So my next question will be okay, we have to find the clients, but how we can approach, like how to deal with the client. Like clients are not easy to deal with. Like they are persons and they have different mindset. They are barriers also. Like how you deal with the clients and get the clients. So I want to share one experience which happened me recently. तो मुझे एक क्लाइंट मिला था रेफरल से, one of my friend वाला क्लाइंट. तो शी वॉज टेलिंग मी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको नीट चाहिए, उनको परफेक्ट चाहिए, बहुत सारे एडिट्स चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड इवन आई वाज लिटिल स्कैर्ड, बट देन व्हेन आई गॉट इनटू कॉल विथ हर, when I started telling my things, she didn't even interrupt me. She was okay with all the things I was saying. So then I noticed one thing ki if first of all your confidence matters so much, what happens is आप सच बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हो. तो उनको आप डाउट से बोलोगे ना, तो वो समझेंगे कि अरे ये खुद डाउट में है. तो इफ यू टेल समथिंग विथ कॉन्फिडेंस, लाइक आपको पता है कि होगा, लाइक वो कब होगा, जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया है. इफ नाउ आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस. सो वो कॉन्फिडेंस से, नंबर वन कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. एंड सेकेंडली वो अपस्किलिंग से भी आ जाती है, क्योंकि जब आप अच्छे से अपस्किल करते हो तो क्लाइंट से ज्यादा आपको थोड़ा पता होता है. तो जब आप उसको सजेशन एज अ सजेशन देते हो तो क्लाइंट भी बहुत खुश हो जाता है. आई कांट बिलीव दिस. उसने जो बोला था और यहाँ पे कुछ और हुआ. तो एज तो ये डिफरेंट क्लाइंट्स होता है. और वेरी, एंड आई एम नॉट चीटेड ऑल्सो. आई गेट दैट पेमेंट, आई मीन 50% एडवांस पेमेंट एंड एवरीथिंग. सो वेरी रेयर गेटिंग ऑन अ कॉल. Even we get on a call, as I said, I'm confident. It's just that practice से आता है. इसलिए मेरा फर्स्ट कॉल में मैंने भी कौन सा उखाड़ा नहीं था. We were so under confident. So yeah, that's the thing. I think I'm able to answer your question. Okay, so basically we should have more confident that what we are going to sell. Confidence. Have to be more confident. Yes. Okay.
Do you set any monthly goals like I have to set this target for me like इतना मेरे को learn करना है इतना मेरे को earn करना है in freelancing or you just go with the flow like I set goals but not like that, अभी मुझे बिजनेस के लिए मुझे सपोज रिंग लाइट चाहिए, ओके, रिंग लाइट का कॉस्ट है 6,000, तो आई एम लाइक ओके, मेरे जो मुझे अभी जो चाहिए उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ फर्स्ट, अगर वो 40,000 में या 30,000 में आ रहा है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बिजनेस ओनली, बिजनेस के अलावा वैसे मैं खर्च नहीं करती, मैक्स टू मैक्स फूड में जाता है मेरा, तो और ऑल्सो मेरा कॉलेज का फीस भी इतना ज्यादा नहीं है, गेट स्कॉलरशिप एंड ऑल, तो अभी 30,000 है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो लेने के लिए मैं वो काम करूँ, तो अगर ज्यादा आया तो ठीक है, अगर 50,000 आया जैसे यूजुअली आता है तो ठीक है, बट 30,000 मिनिमम आई ट्राइड एंड आई डोंट फोर्स माई सेल्फ ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट। मैं डेली कोल्ड आउटरीच करती हूँ, आई गो टू आई मीन डेली मेरा चलता ही रहता है, तो कभी ना कभी मेरे क्लाइंट्स ऐसे मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं जैसे नहीं होने से, क्योंकि मैं कोल्ड रीच हमेशा करती हूँ और आई गेट रिप्लाईज, टू बी ऑनेस्ट। what's your favorite skill to be like तुम्हें कौन सा चीज है जो स्किल है that you interest like इस पे इस पर्टिकुलर स्किल पे काम करना है that interest me इस पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है स्पेसिफिक हो गया है या अभी जनरल चल रहा है कि ये भी ट्राई करते हैं वो भी ट्राई करते हैं या यू आर मोर स्पेसिफिक नाउ Mine is specific and I am fascinated about social media management only. That too for mompreneurs and female entrepreneurs, very niche. वो भी for want to say like you are a college student you are trying things out in this you are trying freelancing but in after college people get jobs after that they are doing freelancing so what's their mindset like so what do you think like what are their mindset that they start doing freelancing or starting a YouTube channel so what's the take on this या टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता 9 to 5 जॉब होता क्या है, तो आई एम वेरी बैड एट टेलिंग दिस, बट मैंने सुना है, सर्वे सब किया है, मुझे क्या लगता है कि पहले जमाने में यू हैड नो ऑप्शंस, लाइक कहीं या तो भैया बोलेंगे आर्ट्स ले लो या मम्मी पापा दे टुक अप एंड दे आर डूइंग, I mean, I'm talking about the A type of person. I'll come to B type of persons also. So maybe for that reason, freelancing fascinated them and they took up. Or as a B type of person, I think उनके जमाने में था ऑप्शंस थे बट दे डिडंट एंजॉय, लाइक सलोन मिलेनियल बेसिकली, तो उन्होंने आई हैव डन पॉडकास्ट विद लॉयर्स हु लिटरली सेड मी कि दे टुक अप लॉ, उन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया बट उनको मजा नहीं आया, so that's the reason they switched, okay, and the people who switched, they had this confidence, they had this guts to actually do the things they want. अभी भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, and also the risk part is actually high compared to the student वाला thing. अभी मैं कमाऊं या ना कमाऊं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इट्स समथिंग लाइक व्हिच इज एडिंग ऑन टू मी, दैट्स इट, सो बट 9 to 5 जॉब, it's so complicated. yeah so basically they have the more risk taking capability to take that Yes. risk even after they are settled in the terms that we call settled because I you get your first high paying client My first high paying client was it was an inbound client, I never expected. Inbound client, I do creation, the content creation on Instagram, LinkedIn and Twitter. So after seeing that, a person approached me, so if a person is approaching me after seeing my work, that's an inbound client. So for तो उसके लिए आए थे, I never charged so much, but that person was ready to pay me 3 rupees for one word. So okay like that, and he wanted some 20 articles, that too on meme marketing or something like that, related to marketing only. So for that reason I was like this so person the actual amount 60,000 or something per client, I think. If words were 500 words, okay, the words were 500, I don't know the calculation because that person was paying me something like weekly or something like that,
but it was so much. It was something like around 50,000 to 60,000 only per client. Okay. So that's what's your first Yeah, experience with yeah. the high paying plan. That to Indian client. That to Indian client. Okay. So just tell me basic difference, like how Indian clients work and how international clients work. Like if you done work with both, so you can just share the experience. Yeah. First of all, the payments, you get more from international because unke liye it's very low, and for us it's tough. And and whenever I have onboarded this client, the clients are so happy, by Indian freelancers, because we do literally everything. Like we do more than they ask, and everything, our culture, the way, and everything. Might be you face some communication ka gap हो सकता है. I mean, if you're good at English, then fine. नहीं तो अगर there are people who are doing freelancing in Hindi also. Unfortunately, they can't speak, or they can't understand foreign clients. Except for that, the communication एक problem होगा, because Indian clients में तो we can talk in Hindi, we can talk in English, right? The communication problem होगा. And also, the timing, because see, if the person wants, I can't post at 9 at the Indian timing, right? So I am a social media manager, so वो थोड़ा सा problem होता है. So scheduling and all you have to do. And now the reels you can't even schedule it. So except for that, the workflow and the deliverables, it's all almost same. Communication is बहुत बड़ा problem. What are your major lessons till now? Like what are you learned from freelancing till now? Number one, consistency. Consistency really pays off, because the day I started, I've not stopped. And second one is, college where we learn ki theory. It's when we do this practical thing, actual में theory समझ आता है. Okay. So if now you ask me to go and give a presentation of freelancing, graphic designing, or any stuff, I'll be ready. But if you ask me to give a presentation on my studies, either I'll mug up or I'll copy from Google and go and do something and come, because there's no proper understanding. To understand something, we need to do something practically. But in school, as I'm a science student, even though practical all things happen, but what happens is, पहले theory उसके बाद practical. But they should do ulta, to be honest. Practical first, and then you understand the theory. And also still, the freelancing, the exposure, the practicality the freelancing gives, nowhere. And third is, discipline. I learned discipline from freelancing. I was not completely indisciplined also. In school I was fine only, but after coming back I was so indisciplined जो भी है. And also I learned the value of time. Okay. Major thing कि because we earn per hour, right? कि जो भी हम करते हैं वो सब value of money I learned. Yeah. Like we know that like एक घंटे में इतना काम किया, like एक घंटे में इतना काम हो जाता है, because we get paid for that. Yeah. That's the motivation we get. Oh, so my next question is, what is social media management? Like you are more into this specific niche SMM. So what it is all about? How those who want to start, how can they start it? So just tell me brief intro about what is SMM. Okay. So basically, social media management में, it's something like a package. ऐसा नहीं है कि content writing में आप बस content writing कर रहे हो, but इसमें क्या है, आपको hashtags का जो है वो लेके आना है, आपको generate करना है, और आपको captions भी लिखने हैं, और social media की post के ऊपर जो जाता है वो, and also the designing part. तो इसमें क्या होता है, नंबर वन, इसमें बहुत सा एडवांटेज है कि अगर जब आप प्रोवाइड करते हो सर्विस, क्लाइंट विल नॉट लुक फॉर अनदर पर्सन, and the client is likely to be with you for long term. Okay. So, and also if you show them the results, then boom, first of all आपके जो भी आपका जो इनकम है वो तो इंक्रीज होगा ही, उसके साथ में भी आपको रेफरल्स मिलेंगे, एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू विल गेट. एंड आई थिंक as a as a newbie starting social media manager, वो आपको थोड़ा टफ लगेगा. But the thing is, it's not impossible. But yeah, in 2-3 months you can start. Like if you start with content writing, तो वो हो जाएगा. या तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा. बट क्या है, कंटेंट राइटिंग में ज्यादा होगा, क्योंकि लिखने का ज्यादा होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में.
डिजाइनिंग आपको थोड़ा सा सीखना, बेसिक डिजाइन, बेसिक इन द सेंस में यूआई यूएक्स वाला डिजाइन नहीं, द नॉर्मल पोस्ट वाला डिजाइन वो सीखना है. Canva. With the help of Canva, we can do that. या विद हेल्प ऑफ कैनवा यू कैन डू इट, बट अब सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में जाओगे तो उसमें ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स चीजें सीखनी पड़ेंगी. बट Okay. इट्स समथिंग एवोल्यूशन टाइप है. वो कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करो, फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में एंड अप करो. ओके, तो ऐसे में वो भी आता है क्या, लाइक इंगेजमेंट, अकाउंट पे इंगेजमेंट बढ़ाना? नंबर वन, जब आप क्वालिटी कंटेंट देते हो वो खुद ही जनरेशन हो जाता है. अगर आप इसमें एक और टर्म है वीए, SMM VA, तो वो लोग क्या करते हैं, 1 hour बोलते हैं कि हमें दो, एंड 1 hour में दो फ्रीलांसर्स आपके जो भी DMs है, कमेंट्स है, या जो भी जनरेट करना है फॉलोअर्स वगैरह, वो सब कर लेते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं. तो वो VA टाइप्स हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में बेसिकली वो क्वालिटी, द कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ओके. क्वालिटी अच्छा हो जाएगा वो. If you want, you can provide the service with extra charges. ओके. Which I, yeah, so I take extra charge if they want engagement. नहीं तो that's it. Okay, so what you do in engagement, like extra charges you paid for that, like what are your techniques, what you do in this? I put valuable comments in this, उनके जो भी similar niche होता है, उनके niche को देख के, the profile के जो visits है वो ज्यादा होते हैं. अगर your profile is good, आपके followers ज्यादा होते हैं. And also, this is something like algorithm type. Instagram will see you. If you're just coming, posting and going, then it will not show to many people, right? So if you have to engage, and also idea मिलती है कि next क्या बनाए, next हमारा strategy क्या हो. जब हम लोग अपने खुद जो हमारे competitors को देखते हैं तो हमें ideas मिलते हैं. और जब content, when you do this batch content, तो तब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत. So that's it. And yeah, I try to cold DM them, I try to cold DM. But Instagram में वैसे होता नहीं, until and unless you build relationships. So Okay. So will you recommend as a newbie, like जो freelancing journey start कर रहा है, कि he or she would start with SMM, not just have a good start? you can start with, have a good start. It's better to start with content writing. At least कुछ लिखना start करो, नहीं तो खुद का प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करो. इवन इफ यू डू दिस कंटेंट क्रिएशन, तब भी आपको आइडिया मिल जाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में. बट क्या है कि डिसअपॉइंट ना हो से, या क्लाइंट के साथ झगड़ा वगड़ा होने से अच्छा है कि हाँ. आप थोड़ा खुद सीखो, ट्राई टेस्ट करो. एंड ऑल अबाउट योर द क्रिएटिविटी एंड द आइडियाज, हाउ यू पुट इन फ्रंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी मेन होता है. To learn that strategy, you need to experiment yourself. That's it. कि कब पर्सनल पोस्ट कब जाना है, प्रमोशनल कब जाएगा, शेयरेबल क्या क्या होंगी, तो सब बहुत मैटर करता है. Okay. So what is content creation? Like just give brief intro. What is content creation? उसमें क्या क्या आ जाता है? Just explain that. Content creation is it's like two types. एक you're just learning things and you're sharing with your audience. Okay, I always say this to my students also. Please don't copy paste from Google. Get 7 types of freelancing, वो सब टाइप क्या वो तो खुद जाके भी देख सकते हैं. what you have experience, जब आप वो बोलोगे और जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो भी आपके अगल बगल में जो भी ऑब्जर्व करोगे, तो आपको वहीं पे आइडियाज मिल जाएंगे. एंड अपना परसेप्शन डालो और बोल दो. और नेक्स्ट टाइप के होते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिल्ड किए होते हैं, लाइक जो बड़े बड़े नेम्स होते हैं, लाइक वरुण माया हो, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने जर्नी पे अगेन कंटेंट क्रिएट करते हैं. दैट्स व्हाई दे वेरी इजीली गेट फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो थिंग इज, अगर आप खुद ऑनेस्टली आपकी जर्नी के ऊपर कंटेंट बनाओगे, जो आपको पता है उसके ऊपर बनाओगे, कुछ सीख के बनाओगे, so that will be better. Even if you're creating, put your perception into it. नहीं तो एटलीस्ट इंस्पिरेशन लो, खुद का कुछ बनाओ. लाइक आपने कुछ का वीडियो आइडिया उसको लेके बनाओ, दैट्स फाइन. So वो it authentic लगेगा, real लगेगा. और do you into books? Like do you read books? Yes, I read books, and I'm like I'm a person who consistently read books, at least 2-3 pages a day. तो मैंने recently एक strategy बनाया था कि 1 week में at least I need to invest 4 books on myself. It's not about the numbers, I should gain something from them. Okay, so like that books I am buying and reading. Okay. Currently So I am reading.
Yeah. So in this month, I have finished two books. One book is Crunch It on LinkedIn from Ishan Sharma, and second one is The Pajama Profit from Varun Maya. And now currently I'm reading Psychology of Money. Okay. Just share some experience of any book you want to share, like that will help other people also. And Crush It on LinkedIn में what happened was I am a creator on LinkedIn, तो मुझे already 80% तो पता था. So there were little things which I didn't know, but I got to know from that book. And that book is something like only 80 pages का book. So you can just read it in one go. I could read it in 2 hours. मैंने just ईशान को mention किया कि I'm reading your book, and again after 2 hours I went and gave him the review कि कैसा था. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि if you want to start with LinkedIn, जो भी cold outreach है कुछ भी है, the book is fine. The book is so good. okay, If it is good over a course, like आपको LinkedIn पे कुछ course लेना है तो उससे अच्छा आप ये book पढ़ लो, इसमें सब कुछ cover है. Everything is okay, covered because I am a person who has done course on LinkedIn, so I have also tried and tested. That's the reason. And second, पायजामा प्रॉफिट के बारे में ज्यादा बताना चाहती हूँ. उसमें A to Z फ्रीलांसिंग के बारे में है. So if you so much कि अभी कैसा होगा, फ्यूचर में कैसा होगा फ्रीलांसिंग, कैसे कोल्ड डीएम्स करना है, कैसे क्लाइंट्स फाइंड करना है, कैसे बैलेंस करना, एवरीथिंग इज देयर ऑन दैट बुक. Even though that book was written something like 5 years ago, but it still works. And it's also, still I think relatable. Okay. related. So I thought कि अभी भी relatable होगा, and it is still now. And that book उन्होंने लिखा था कि assume किया था ऐसे ऐसे होगा फ्यूचर में, वो exactly वैसे ही हो रहा है. Just want to ask one thing, like you do so much stuff and you're just so focused towards your work. Distraction को कैसे maintain करते हो? Like distract नहीं होते हो? Like how you keep yourself focused? Like you are in college, there are fests going on, there are other things going on. How you keep yourself motivated and focused? देखो अभी राइट नाउ आप मानो या ना मानो, मेरे बस एक ही डिस्ट्रैक्शन, वो है स्टडीज. स्टडीज इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टडी भी कभी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. Okay. दैट्स द ओनली डिस्ट्रैक्शन. एंड बाकी बचपन से मैंने ये सीखा है कि खुद से सीखा है कि जब तुम लोगों के पास जाते हो तभी फोमा स्टार्ट होती है. जब तुम उनसे आइसोलेट कर लेते हो, अपना खुद का काम करते हो ना, कुछ फोमा आता ही नहीं है. आई मीन हॉस्टल, आई स्टे अलोन. Yeah. द थिंग I know I was not distracted, but the environment. अब बस अपना environment change कर दो. That's it. Distraction से कुछ होता नहीं है, अपना environment change कर दो बस. Yeah, but in college we have distractions. Like automatically we have distractions. Like we go to class or anything, something another thing happen. Maybe senior called us, and कुछ भी हो जाता है college में. Random stuff going on. So how you get just so focused? मुझे कभी फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं लगा है, क्योंकि Okay. मैं दोस्तों के साथ अगर चिल करूंगी तो मेरे को पैसे नहीं मिलने वाले हैं. खुद अपना काम करूंगी तो मेरे को पैसा मिलेगा. और आई कीप वन डे वेयर आई जब मैं फैमिली के साथ जाती हूँ, कजिन्स के साथ जाती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ मैं. एंड आई ऑल्सो गेट ऑन जूम कॉल. मैं को वर्किंग सेशन करती हूँ फ्रीलांसिंग दोस्तों के साथ. मैं मेरा खुद का टीम है, मैं उनके साथ बात करती हूँ, वेबिनार अटेंड करती हूँ. दिस नो लॉन्लीनेस. मेरे जब दोस्त है ऑनलाइन पे, मेरे कोई ऑफलाइन दोस्त है भी नहीं. ओके, गिवन टाइम, लाइक अब मैं गई हॉस्टल से घर गई आफ्टर सेम एग्जाम एंड ऑल, मैं फ्रीलांसिंग छूटी नहीं हूँ. आई विल बी फुली इनटू माय फैमिली. एंड मेरा फैमिली ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी लग्जरी थिंग्स है, बट द थिंग इज आई एम फोकस्ड ऑन माय सेल्फ. Ambitious person, you learn stuff, you are hungry for new things, new skill set, everything. Like you are curious also. Like so what's ये inbuilt है या कोई online somebody inspires you? Yeah, so if any online person you want to name that inspires you a lot, कि अगर कोई down time आ रहा है तो you get inspired by that person, any role model you have? रोल मॉडल डेफिनेटली. और एक बिलीफ है जो बचपन से है कि बचपन से क्या होता है, person only. I mean, I make realistic plans only. वैसे thing is, I know my weakness and strength very well. So according to that, I do this planning कि मेरे को अगर ये कॉलेज चाहिए, टॉप में भी होना चाहिए और मेरे कैपेबिलिटीज को मैच भी करना चाहिए. तो Yeah. उसको रख के लग जाती हूँ. तो यूजुअली आई बिलीव इन ऑल दिस मैनिफेस्टिंग थिंग्स. तो मेरा बिलीव से ही सब कुछ मिला है. आई जस्ट वांट टू टेल कि सब कुछ होगा. बिलीव रखो. और
द मैनिफेस्टिंग, जो भी आप गॉड समझते हो वो उनपे। आई बिलीव इन कृष्णा लॉट। मैंने 12th स्टैंडर्ड में भगवत गीता पढ़ा था। दैट्स इट। एम तो ये है कि 25 ईयर्स में मुझे रिटायर होना है। आई जस्ट वांट टू डू द थिंग्स जहाँ पे मनी है नहीं। लाइक आई एम एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो मुझे फार्मिंग वार्मिंग इस सब में थोड़ा इंटरेस्ट है। एंड या मुझे फूड इंडस्ट्री बिल्ड करना है खुद का। Who look up to? Many, like, starting from Aman Dhattarwal, Varun Maya, Raj Shamani, and Saloni. These are Ishan. Okay. So यही मेरे mentors है. तो yeah, that's it. Recently, it's like adding up, कि जैसे मेरे को वरुण माया मैंने discover, I'm very happy to discover it. So yeah, I just match my journey with them कि मुझे भी ये करना है, तो Yeah. like that. Okay. So yeah, that's it for the interview and all the questions that I have covered very well. And I also enjoyed interacting with you. I learned so much also. So I just want to say anything you want to add on, any last lines that you want to say. You have covered all the things very nicely, but at the end, there's those who really want to do but can't push them, who can't push yourself, like who nahi kar pa rahe hain somehow for any other reason. Whatever the age doesn't matter. Even you are young, but age is does not matter in freelancing. So what's the last message you want to say? Last, I want to say कि do what you love, because when you don't do what you love, you don't give the patient when people come to you. अभी I can make out if the people is, you can make out, right? अब बस में जाओगे तो कंडक्टर अगर आपसे बहुत शांति से बात कर रहे, it means the person loves the work. ये तो जाओ यार ऐसे ऐसे बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो, अब because you couldn't do the things you love. Because if you do the things you love, I'm telling you, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये जो प्रोडक्टिव का जो भी आप है, वो कुछ भी नहीं आएगा. तो मेक श्योर यू डू व्हाट यू लव, सो दैट यू डोंट डिस्टर्ब, आई मीन यू डोंट, आई डोंट नो द वर्ड, बट यू डोंट डिस्टर्ब कुछ अलग लाइफ में आप कुछ भारी नहीं पड़ रहे हो, not disturbing others, hurting others basically. So that's it. Do what you love. There can be anything, Yeah. do what you love. Okay. So all we want to share with you. I hope you all enjoyed the conversation we have. All I hope you get all the answers about freelancing, and you should also follow these persons that she mentioned, the mentors like Saloni, Varun, Shan, these people. I will give the link of her Instagram account in the description. If you want to follow her, you can also follow her. So this is all from this video, guys. I hope you like it, and I will be coming with next informative video very soon. Until then, you take care of yourself and bye.